the test of detachment. Who are going to pass it? काशी करवट खाने से सारा पाप भस्म हो जाएगा। काशी करवट। हाँ। Student, by performing Kashi Karvat, all the sins will turn into ashes. Kashi Karvat is an ancient practice of voluntarily falling into a well which has a huge sword fixed at the bottom. It is situated in Kashi, Banaras. Baba, Kashi. Student, Kashi Karvat. Baba, yes. वैसे ही हमारा विहत में भी एक बार निश्चय होगा तो बाबा के प्रति तो पूर्व जन्मों का पाप सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हो जाना चाहिए। Student, similarly, in the unlimited as well, once by having faith in Baba, will all our sins of the previous births end? Baba, they definitely should. जन्म का पाप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Student, the sins of the 63 births? Baba, of course. अभी काशी करवट खाने वाले निकल रहे हैं कि नहीं? Now, are people emerging who perform Kashi Karvat or not? जो काशी करवट खाने जाता है, The one who goes to perform Kashi Karvat, भक्ति मार्ग में गए ना, कुएं में गिरे ना। they went in the path of bhakti, didn't they? They fell into the well, didn't they? तो जो भी गए, So all those who went to perform Kashi Karvat, उन्होंने उस दुनिया से नाता तोड़ करके गए या बुद्धि में नाता जोड़ा रहा फिर कूदे? did they go there breaking all their relationships from that world, or was their intellect connected when they jumped into the well? है? नाता तोड़ के गए। They went breaking all their relationships. तो यहाँ भी जो जाने वाले हैं उनको ये तो मालूम हो जाता है कि वहाँ जाएंगे तो ना माँ बाप से, भाई बंधुओं से, ना मोहल्ले वालों से, ना यार दोस्तों से, सखी सहेलियों से फोन से बात भी नहीं हो पाएगी। Here also, those who go know. When we go there, we won't be able to talk to our parents, siblings, friends, neighbors, beloved ones or companions over the phone. है? आमने सामने मिलना जुलना भी नहीं हो पाएगा। We won't be able to meet them face to face either. क्या? What? मिलना जुलना भी नहीं है, न साथ बैठना होगा, न साथ खाना होगा, न साथ सोना होगा। We won't be able to meet them face to face. Neither we will be able to stay together with them, eat, nor sleep together with them. तो नया जीवन हो गया या पुराना ही हुआ? नया जीवन हो गया। So, does it turn into a new life, or is it the same old one? It became a new life. ये जीवन में करवट कहाँ ली? Where did life take a turn? कहते हैं करवट ले ली, दाईं ओर से कहा करवट ले ली, बाईं ओर ले ली। It is said he turned. He turned from the right side to which side? Towards the left side. परिवर्तन किया ना, He changed, didn't he? तो उसको कहते हैं काशी करवट। So it is called performing Kashi Karvat. कहाँ की करवट ले ली? He turned towards which side? काशी नगरी की करवट ली। Towards the city of Kashi. भक्ति मार्ग में मानते भी हैं It is believed in the path of bhakti as well. कि वहाँ जाकर के जो मरते हैं दुनियादारी से, वो कहाँ जन्म लेते हैं? Those who go there and die from the worldly affairs, where do they have a birth? वो नई दुनिया में जाके जन्म लेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। They will go and have a birth in the new world. They will go to heaven. काशी में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। If they die in Kashi, it is then they will go to heaven. इतने ढेर के ढेर काशी में मरते रहे, स्वर्ग में तो कोई गया नहीं, न कोई प्रूफ मिला। So many kept dying there, but no one went to heaven. No such proof was found. हाँ, इतना जरूर है, अंत मते सो गते। Yes, it is certain that the final thoughts lead you to your destination. That is Ant Mate So Gate. यहाँ अंत मते की प्रैक्टिस बाबा करा रहे हैं। Here, Baba is making us do the practice of Ant Mate. क्या प्रैक्टिस करा रहे हैं? What is he making us practice? हमारी आखिरी परीक्षा क्या है? What is our last exam? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। Nashto Moha Smritir Labdha, meaning conquering attachment and regaining the awareness of the self. तो शुरुआत हो रही है। So, the initiation is taking place.
निकलने वाले नंबरवार निकलेंगे, निकल रहे हैं। Those who are going to come up will come up. They are even coming up. पवित्र आत्माएं पहले निकलेंगी या पवित्र निकलेंगी? Will the pure or the impure souls come up first? पवित्र आत्माएं पहले निकलेंगी। The pure souls will come up first. बच्चा महात्मा कहा जाता है। A child is called a noble soul. तो जो बच्चा बुद्धि होंगे, सीधे साधे होंगे, वो निकलेंगे या तिकड़मी बुद्धि वाले निकलेंगे? So, will those who have a childlike intellect, who are simple natured, come up, or those who have a crooked intellect come up? सीधे साधे बच्चे निकल रहे हैं। The children who are simple natured are coming up.